Hello everyone, my name is Simran Kapoor and I warmly welcome back you all to my channel English Made Easy. Today we are going to talk about how to speak in English, okay? So we are going to learn about what you have to do, what are those steps that you need to follow, how you can get started with learning to speak in English. So today we will be talking about this, and this video is for the ones who don't know how to speak in English, and which may be the cause of so many problems in their career, in their personal life, and it may be a hurdle in their self-confidence, self-esteem, and so many more reasons. All right. So I would be going to share some steps with you, very simple steps, very simple, that you just need to work on to start speaking in English. Okay. But before I start, I would request you to please subscribe my channel. Obviously, this is yours too, because you guys are learning and growing by watching these videos. And don't forget to hit this bell icon also. Now let's get started. So these steps are going to be really very quick. These are going to be very easy. These are the steps that you can do, you can follow every day, and that too for a minimum 10 to 12 minutes every day. And this has to be a session, this has to be a continuous a continuity of 25 to 35 to 40 days. Okay, I bet you after 35 days or after 30 days you will be able to speak English, you will be able to understand English as well. These steps are really simple. Please stay until the end of the video. So this is a 3-step process. Okay, the first step says that you need to listen to English. Okay, now this is, I have really shared with you guys previously also, because this is the only way you can learn English. Because if you are a beginner, as a beginner you will not be able to speak English if you are jumping on to learning its grammar, if you are jumping on to learning every chapter of English grammar, of English language. No, this is not the right way. Okay, the right way is you have to start listening. You have to listen to something, okay, something new. Suppose you want to listen, suppose if this is not even English, okay, if this is any other language, Spanish. So what would I do is I would start listening it first before getting into its details, its grammar or something other stuff. The more we listen, the more we start putting that language into our brain, okay, into our thinking part, into our mind. Okay, so what you have to do is you have to listen to the English songs, you have to listen to English conversations on YouTube, you have to listen to English news on television, as well as on your mobile. You have to start reading also. Okay, so now here I've written identify the patterns used for what kind of actions. So I would like to discuss this a little further, that any language is learned not by learning its grammar in the initial stages, but by listening to it, by being with it. Okay, by identifying the patterns with it. A new language is learned not by learning its grammar, but by sticking to a pattern, the pattern that it follows for each and every kind of action. And there are different kinds of actions in any language. Let's discuss them. Now, there are different states of any action. The action, it could be continuous also. There could also be an action that has been completed. Okay, I have done my work, right? Then there are actions that are done every day. Then there are actions that are our habits. And then there are also actions that are universal truths. The sun rises. The sun is rising. It is an action and it rises every day. That means it is a universal truth, right? It applies to the whole universe. So an action has different states. And what we have to do is, while we're listening English, we have to identify these different states, right? Whether the action is in continuous or it has been completed or it is an everyday action, and how English is said for those actions. For example, I have just taken one state here. I have taken the continuous state here and just identify the pattern here. For example, वो तुम्हें बुला रहा है. He is calling you. क्या सीता गा रही है? Is Sita singing? हम आज तुम्हारे घर आ रहे हैं. We are coming to your house today. तो ये जो actions हैं, if you see them carefully, so इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है. बुला रहा है,
सीता गा रही है, ठीक है, हम घर आ रहे हैं। तो ये सब जो एक्शंस हो रहे हैं हिंदी में, ये सब कॉन्टिन्यूटी में है, राइट। बुला रहा है मतलब ये एक्शन चल रहा है, सीता गा रही है, वो भी गा ही रही है, अभी गाना खत्म नहीं किया उसने, यहाँ गाना शुरू नहीं करा, गा रही है। हम आज हाँ तुम्हारे घर आ रहे हैं, राइट। तो इसके लिए हमने एक बेसिक सा एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रखा है। देखिए जैसे रहा है, रही है, रहे हैं के लिए हम यूज कर रहे हैं इज ing लगा देते हैं, वर्ब में इज ing लगा देते हैं, या फिर आर, क्योंकि वी था यहाँ पर, वी मतलब बहुत सारे लोग हो गए, तो बहुत सारे लोगों के साथ तो वी कैन नॉट यूज इज, सो वी हैव यूज्ड आर हियर, तो इसलिए हमने आर लगाया, फिर ing लगाया। तो आप ये जब आप इंग्लिश को लिसन करेंगे, जब आप इंग्लिश लिसनिंग करेंगे, जब उसे सुनेंगे इंग्लिश को, तो आप ये देखें कि कौन से एक्शन के लिए क्या कैसे बोला जा रहा है। जैसे वो तुम्हें बुला रहा है, ही इज कॉलिंग यू, ing लग जाता है, ठीक है। ही इज कॉल यू नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्या सीता गा रही है, इस सीता सिंग नहीं बोलेंगे, गा रही है, ठीक है, रही है पैटर्न आ रहा है यहाँ पे, तो ing लग जाता है। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। अच्छा, ध्यान से आप आइडेंटिफाई भी ना कर पाए तो बस आप उससे सुने और आप उसको सेम एज इट इज बोल दें, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप भी है आगे इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इंग्लिश इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश को सीखने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप उसकी ग्रामर पढ़ें, आप उसको बस उसको सुने, ठीक है, और उसको आप रिपीट करें, उसके पैटर्न को समझें और वो पैटर्न देखें कि अच्छा ऐसे एक्शंस के लिए ऐसे बोला जाता है, ठीक है। जो जैसे यहाँ था कॉन्टिन्यूस एक्शन था, इसके लिए हम ऐसे बोलते हैं, ing लगा देते हैं वर्ब में, ऐसा ही हम, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस एक्शंस के लिए ऑटोमेटिकली ये हमारा फॉर्मेट बन जाता है इज mr प्लस ing, ठीक है। रहा है, रही है, रहे हैं वाले एक्शंस के लिए। ऐसा ही सेम बाकी एक्शंस के लिए भी होता है। जो एक्शन कंप्लीट हो गया, जैसे मैंने अपना काम कर लिया, आई हैव डन माई वर्क, या जो हम रोज करते हैं, ठीक है, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, ऑलराइट। इसके बारे में आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो, but I hope until here my perspective is clear to you guys, ठीक है। अब आगे देखते हैं सेकंड स्टेप क्या है। हमारा सेकंड स्टेप है जो आपने सुना आप उसको बोलें, ठीक है। जैसे आपने ये सब आपने सुना, जैसे वो तुम्हें बुला रहा है, आपको नहीं पता इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, किसी ने बोला इसको इंग्लिश में ही इज कॉलिंग यू, ठीक है। तो आप अगर नेक्स्ट टाइम आपको सेम थिंग किसी को कहनी है तो आप उसको सेम यही बोलें, ही इज कॉलिंग यू, रिया इज कॉलिंग यू, राहुल इज कॉलिंग यू, ऑलराइट। तो आप ऐसे जो आप सुन रहे हैं उसको देन you have to speak it, start speaking in the same way, use the same words for the same kind of actions, okay। उसको बोलें रोजाना, ठीक है। लेकिन सुनना आपको पड़ेगा, आपको कोई YouTube वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर कहीं और से भी आप सुन सकते हैं, जैसे टेलीविजन से सुन सकते हैं, या फिर आपके आसपास भी अगर कोई बोलता है तो आप वहां से सुने, उसी को सेम टू सेम उसको स्पीकिंग में लाएं अपनी, राइट। एंड हमारा थर्ड स्टेप है, लास्ट स्टेप है कि आप ये एक्टिविटी रोजाना करें, ठीक है। आप इंग्लिश को सुने, इंग्लिश के सेंटेंसेस कि किसी चीज को कहने के लिए कैसे कहा जा रहा है इंग्लिश में, उसको ही सेम स्पीक आउट करें और यही प्रोसेस रोजाना रिपीट करें। आप इंग्लिश को सुने कि किसी चीज को कैसे कहते हैं, उसी को सेम टू सेम कॉपी करके स्पीक करें, बोलें। बोलना बहुत जरूरी है, बोलने से ही आपको इंग्लिश आएगी, क्योंकि तभी आपका ब्रेन एक्टिवेट होगा और इट विल स्टार्ट टू अडेप्ट टू द लैंग्वेज, ओके। until and unless you will not speak, एक स्पेस क्रिएट नहीं होता है माइंड में फॉर द न्यू लैंग्वेज, सिर्फ आपके दिमाग में आपकी ही लैंग्वेज मदर टंग रहेगी, ऑलराइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज। और यहीं पे हमारी वीडियो आज एंड होती है। ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, बस यही करना है और आपको इंग्लिश आ जाएगी बाय द एंड ऑफ 30 डेज बोलनी। लेकिन कंडीशन ये है दैट इट हैज टू बी कंसिस्टेंट, एवरी डे करना है ये टास्क। You listen it, you speak it, and then you repeat it, okay। So I hope guys you like this video. In case you have any queries, in case you want to give some suggestions or give some you want to know something, you can drop that to me in the comments section, all right। So thank you so much guys for staying until the end. Please stay tuned like this with the channel and with my videos too. Until next time, take care and I will see you soon.